ओके देखो, फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी हम कर रहे थे। थ्री मेन फैक्टर्स हमने किए थे, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर डिस्टेंस और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर डिस्टेंस तो बहुत क्लियर है कि जितने ज्यादा प्रोटॉन नंबर होंगे उतना ज्यादा आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इन अ सिमिलर वे न्यूक्लियर डिस्टेंस मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना रिमूव करना आसान होगा। द आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और न्यूक्लियर डिस्टेंस से इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन अ सिमिलर वे shielding effect is something different. Shielding effect is basically the deciding factor between nuclear charge and nuclear distance, ठीक है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा हो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा हो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो शील्डिंग इफेक्ट पे डिसाइड करता है कि बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट इज प्रिसाइजली the force of repulsion that the outermost electron faces due to completely filled inner shell electrons. अब सवाल अगेन यही है कि द इलेक्ट्रॉन्स देखो, द एग्जांपल्स एल्युमिनियम और फास्फोरस की, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेम आउटर मोस्ट शेल, ये भी तो रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। So does this repulsion also called the shielding effect? तो सवाल है कि no, this repulsion is not shielding effect. When the shell become completely filled, तो वो एक स्टेबल शेल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर अब उसका काम क्या है, सिर्फ जो है वो रिपल्शन प्रोवाइड करना। So basically shielding effect just only because of filled inner shell electrons को हम shielding effect कहते हैं। तो जितना ज्यादा आपके पास जो है वो shells होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा आपके पास shielding effect होगी और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा। देखो shielding effect और न्यूक्लियर डिस्टेंस एक साथ चलते हैं, है ना। जब shielding effect बढ़ेगा इसका मतलब शेल ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियर डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। क्लियर। इन अ सिमिलर वे when we did the ionization energy trend down the group, going down the group, nuclear charge बढ़ता है, yes, the proton number increases, nuclear distance increases क्योंकि shell add हो रहे होते हैं, and shielding effect also increases. Ionization energy nuclear charge की वजह से बढ़ती है, nuclear distance और shielding effect की वजह से getting decrease. So overall क्या हो रहा है? There are two factors trying to decrease the ionization energy value, and there's only one factor trying to increase the ionization energy value. So overall ionization energy में there is a decrease in the ionization energy value. Exam में there's a question, there always a question in which they ask about कि भाई बताइए कि डाउन द ग्रुप व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको क्या आंसर लिखना है? आपने लिखना है गोइंग डाउन द ग्रुप एज इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यू आउटर मोस्ट शेल, द शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेस which cancelled out the increase in nuclear charge, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज को वो कैंसिल आउट कर देता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन डिक्रीज होती है। उसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स पढ़े थे। देखो ये सारे फैक्टर कब इफेक्टिव होंगे, अभी तक हमने जितने पढ़े, विच इज न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ शेल, यानी यू हैव टू कंपेयर the ionization energy value of two elements, जिसके में से एक एलिमेंट का तो इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज बेरिलियम का केस है, सेकंड शेल में हो, और सेकंड एलिमेंट का किस में हो, थर्ड शेल में। तो शेल चेंज होने से शील्डिंग भी बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा कब होता है? व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, शेल जब भी ऐड होते हैं। लेकिन there is a possibility that I give you the example of a two element जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, you can see the outermost electron is present in the same shell, third shell, है ना। न्यूक्लियर डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट सेम, द शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट सेम, दोनों तकरीबन बराबर हैं। क्लियर। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि इफ द शेल इज सेम यू हैव टू कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टू एलिमेंट। अब दो एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी को अगर आपने कंपेयर करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। अगर डिफरेंस ऑफ शेल है तो उसकी बेसिस पे बता दीजिएगा, सेकंड शेल से मुश्किल, थर्ड शेल से आसान। इफ द शेल इज सेम देन देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ सब शेल। जैसे यहां पर है, देखो मैग्नीशियम का द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सब शेल, एल्युमिनियम का इट इज प्रेजेंट इन अ पी सब शेल। और हमने क्या पढ़ा है कि इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पी सब शेल ड्यू टू अ स्लाइटली लार्जर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? ये बात याद रहेगी। तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए आउट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम? बोलो बोलो बोलो। पी से निकालना आसान, आसान का मतलब लेस आयनाइजेशन एनर्जी। सो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम शुड बी लेस देन
मैग्नीशियम। रीजन क्या लिखोगे कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम इज प्रेजेंट इन अ पी सब शेल विच इज इजियर टू रिमूव एज कंपेयर टू अ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एस और पी का डिफरेंस कब देखेंगे, जब शेल सेम होंगे। ठीक है, अगर शेल डिफरेंट हो गए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। थर्ड शेल से आसान, सेकंड शेल से मुश्किल। थर्ड शेल की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम, सेकंड शेल की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा। ठीक है, अच्छा इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल, वैसे ही चेक करने के लिए इसको मिटा देते हैं। इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम था ना, सो beryllium proton number 4, boron proton number 5, can you write down the electronic configuration 1s2 जल्दी से quickly write down the electron। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि which of these element have a less ionization energy value, दोनों में से किसकी ionization energy value कम होगी। beryllium proton number 4, magnesium proton, boron proton number 5। is there any difference of shell present? No. In both cases, the outermost electron is present in a same shell. There is a difference of subshell. So subshell के difference पे हम क्या कहते हैं कि it is easier to remove an electron from a p subshell। ठीक है, तो हमारे पास बोरॉन की ionization energy value जो है वो less होगी। It should have a less ionization energy value। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? So you realize the case of magnesium लिखना नहीं, ठीक है, and the case of aluminium is exactly the same, है ना। मैग्नीशियम अभी हमने ऊपर देखा है ना, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में भी सेम केस है, सेम डिफरेंस है कुछ। तो इस तरह से कुछ पेयर अप में आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका केस, एटम्स होंगे जिनका केस सेम होगा। बट इफ देयर इज अ केस लाइक दिस इन विच द शेल इज सेम, है ना, even the subshell is same। if you look at the phosphorus which is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, so you can see that sulfur के केस में भी 3p है और phosphorus के केस में भी 3p है, शेल भी सेम है, सबशेल भी सेम है। then you have to search for the stability of subshell वाली बात, यानी a completely filled subshell is most stable to highest ionization energy value। ठीक है, हाफ फिल इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, तो हाफ फिल की ज्यादा होगी, पार्शियली फिल्ड की कम होगी। व्हेन आई एम सेइंग पार्शियली फिल्ड इन अ पी सबशेल, व्हेन आई से पार्शियली फिल्ड पी सबशेल, उसका मतलब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पी में, ना तो कंप्लीटली फिल्ड हो यानी 6 सॉरी बेटा, थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी। ओके, सही है जी। लास्ट केस हमने किया था, दिस वन आई सेड कि इफ देयर अ डिफरेंस ऑफ शेल, उसकी बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे, सब शेल का डिफरेंस है उसकी बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे। अगर शेल भी सेम हो, सब शेल भी सेम हो, तो पार्शियली फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड देखोगे, और अगर दोनों पार्शियली फिल्ड हो तो दे नेवर आस्क यू दिस रीजन। ठीक है ना, यानी P4 और P1 का डिफरेंस वो आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं, एंड कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, let's talk about the trend of ionization energy, and we are nearly at the end of this chapter। ठीक है, down the group, sorry, across the period। ठीक है, the trend of ionization energy across the period, यानी I'm talking about moving from left to right। Let's talk about the period 3 of the periodic table।
पीरियड 3 स्टार्ट विद सोडियम प्रोटॉन नंबर 11 एंड देन एक एक प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता जाएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन। प्रोटॉन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन 18। ठीक है, लेफ्ट टू राइट वन बाय वन इंक्रीज। ओके, जस्ट इन केस कि आपको ओ लेवल्स वाली बात थोड़ी सी याद रहे, if can I write this 2 comma 8 comma 1 and this one is 2 comma 8 comma 2, this one is 2 comma 8 comma 6, है ना? As I'm talking about period 3, सर में दर्द हो रहा है क्या लोगों को देख के, है ना? As I'm talking about period 3, so can you see that the outermost electron is added to the same shell? Agree, disagree? थर्ड शेल है ना। देखो ये जो पीरियड नंबर होता है ना बेटा, ये पीरियड नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, all these elements belong to the same period. It means that their outermost electron is present in a same shell. ठीक है, अब मुझे बताइए कि कुछ की पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं। शेल नंबर इज सेम, एग्रीड, है ना? शेल नंबर सेम है। सो व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर डिस्टेंस, बढ़ेगा या कम होगा? Yes, nuclear distance. And what about the shielding effect? वो भी सेम रहेगा, है ना? तो न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट, नियरली सेम लिख लेते हैं हम, ठीक है? इट्स नियरली सेम। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट थिंग व्हिच इज न्यूक्लियर चार्ज? हाँ, क्यों बढ़ रहा है भाई? Yes, increases because the number of protons increases, है ना? 12, 13, 14, 15 and so on. Think again once more. Across the period, the outermost electron is present in a same shell, because of which the nuclear distance and shielding effect is constant, but the nuclear charge is increasing. ठीक है, अब यही बातें हम यहां लिख लेते हैं। सो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड शील्डिंग इफेक्ट। सो आप सबने कहा कि द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड शील्डिंग इफेक्ट नो चेंज, remains nearly same. ठीक है, now effect on ionization energy, because of increase in nuclear charge the ionization energy value increases, है ना? और nuclear distance और shielding effect की वजह से there should be no effect. So what's your take about this? Should the ionization energy value increases, remain same, कम होगी, क्या होना चाहिए? हाँ, बढ़नी चाहिए। So yes, there is one factor which is trying to increase the ionization energy value and other two factors are constant. देखो जिस तरह से हम समझ रहे हैं, आप खुद आंसर कर रहे हो, increases। ठीक है, so left to right ionization energy value across the period increases, down the group कम होती है, left to right बढ़ती है। दोनों के रीजन आपको पता है। I think this arrow वाली बात वर्किंग, अगर इससे समझ लोगे तो बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लिख लिया सारा। नाउ देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि भाई बताइए अक्रॉस द पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, डिस्क्राइब करें एंड देन एक्सप्लेन इट। सो अक्रॉस द पीरियड
as the electron is added to the same outermost shell. ठीक है? The nuclear distance and shielding effect remains nearly same, but nuclear charge increases, due to which ionization energy value increases. ठीक है ना? But the nuclear charge increases, due to which the ionization energy value increases. Left to right बढ़ेगी, down the group कम होगी. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? If I ask you इस ट्रेंड को देखते हुए, if I ask you कि among all the groups of the periodic table, which group of the periodic table should have the highest ionization energy value? पूरे ग्रुप की बात हो रही है. Group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which group of the periodic table जिसकी ionization energy value सबसे ज्यादा होगी? पूरे ग्रुप की बात हो रही है, टॉप टू बॉटम की बात नहीं हो रही. ओवरऑल देखो, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो जो ग्रुप राइट मोस्ट कॉर्नर पे है, दैट ग्रुप शुड हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू. लेफ्ट टू राइट बढ़ती है ना, तो जो राइट मोस्ट कॉर्नर पे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. और राइट मोस्ट कॉर्नर पे कौन सा ग्रुप होता है? ग्रुप 8. तो हम लिख सकते हैं नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट ionization energy value. Noble gases have highest ionization energy value. ठीक है? This is the first statement. तो ये बात याद रखिएगा. Among all the groups of the periodic table, noble gases have the highest ionization energy value. That's clear. Now the next. Among noble gases, ionization energy value should decrease down the group. वो तो decrease ही होती है ना, है ना? Within a noble gases भी decrease होगी. Among noble gases, ionization energy value decreases down the group. ठीक है? अब मुझे बताइए कि among group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 8, which is noble gases, have the highest. ये तो decided हो गया. ठीक है? So can you point out the element that have the highest ionization energy value? It should be the first member of group 8, है ना? Down the group कम हो रही है तो top वाले की सबसे ज्यादा होगी. So helium is a gas that have the highest ionization energy value. ये वो element है जिसकी ionization energy value highest होगी. ठीक है? Helium have the highest ionization energy value. And if I ask you which one is the element that have the lowest ionization energy value, so it must be
इन द ग्रुप 1 एंड द बॉटम, ठीक है, फ्रेंसियम, रुबीडियम, जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है बेटा कि आपको क्वेश्चन में रेदर देन गिविंग यू द एंटायर पीरियोडिक टेबल, दे गिव यू अ पिक्चर ऑफ अ पीरियोडिक टेबल विद फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे आपको दिया हो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम, एंड देन यहां लिखा हो क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन लिखा हो हीलियम, एंड देन आर्गन, ठीक है। दे माइट गिव यू अ पिक्चर लाइक दिस, ओके। और इसमें से पूछे कि भाई अब बताइए कि विच एलिमेंट हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। सो यू कैन सी अमंग द लिस्ट, यू कैन सी वी हैव हीलियम। हाँ, तो आप अभी तो पिक करोगे हीलियम को हाईएस्ट आयनाइजेशन, और लोएस्ट के लिए किसे पिक करोगे? रुबीडियम को। सो इन दिस पिक्चर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हीलियम की है और लोएस्ट किसकी है? रुबीडियम की। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। नाउ which element have the highest ionization energy value? आर्गन की, ठीक है। और लोएस्ट किसकी होगी? पोटेशियम की। और अगर मैं इसको भी मिटा दूं, इसको भी, अब किसकी होगी? बात समझ आ रही है कैसे चेक करना है बेटा? ऑल्दो दे गिव यू द एंटायर पीरियोडिक टेबल और दे गिव यू पिक्चर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, हाईएस्ट के लिए टॉप राइट, ठीक है, और लोएस्ट के लिए लेफ्ट बॉटम, बस ये दो पिक करना है, ठीक है। तो इन दिस केस द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज फॉर दिस वन इज द लोएस्ट वन, एंड दिस वन इज द हाईएस्ट वन। जितनी भी आपको पिक्चर गिवन होगी आप उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर करेंगे, ठीक है ना। ट्रिक समझ आ गई किस तरह से आंसर करना है? नाउ ये बात भी समझ आ गई कि हम किस तरह से नोबल गैसेस में हीलियम इज द एलिमेंट दैट हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, एंड दे आस्क अबाउट हीलियम मेनी टाइम्स। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बोला है कि आप एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिफाई कीजिए विच हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ। इसी को हम ग्राफिकल वे में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ देखिए जनाब, लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ पीरियड 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के आयनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ की बात हो रही है अक्रॉस द पीरियड। सो this is ionization energy value. It is in a kilojoules per mole. ठीक है, that's the unit of ion. And here I'm going to write down the proton number. यहाँ क्या लिख रहा हूँ? Proton number. ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर लूंगा पहले and then I'm going to explain. जनाब, the first member is sodium, प्रोटॉन नंबर 11। तो सोडियम के से ज्यादा किसकी होनी चाहिए? मैग्नीशियम की, ठीक है। सोडियम, सोडियम से ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम से ज्यादा होनी चाहिए एल्युमिनियम की, बट इट इज लेस देन एल्युमिनियम। बताएं भाई क्यों लेस है? एल्युमिनियम एल, चलो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे इस पे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। दिस वन सर, रिकॉर्ड हो रहा है? ओके, so yes, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and then argon, ठीक है। now aluminum 13, silicon 14, and then you have phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, and then argon 18, ठीक है। which period? This is for period 3 of the periodic table, okay, across the period graph. Now my question is, we said के from left to right the ionization energy value इंक्रीजेस। क्या होता है? बढ़ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लेफ्ट से राइट पर, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा राइट कर रहा हूं, सही ना? द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यू कैन सी एल्युमिनियम इज आफ्टर मैग्नीशियम इन अ पीरियोडिक टेबल, ऐसे ही ना। सो व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम? दैट्स द क्वेश्चन।
Why the ionization energy value of aluminum is less than magnesium? Huh? सोचो सोचो. I think we just did it before the start of this class. Because the outermost electron of aluminum is in a p subshell, which is easier to remove. That's the same and the main reason. So across the period graph में these are the two exceptional cases. कौन-कौन से? Phosphorus and sulfur जिसमें paired unpaired electron की बात आ जाती है, ठीक है? And magnesium and sulfur की बात. Now, this exceptional case is always between group number 2 and group 3 of the periodic table. Group number 5 और group 6 में होगा. अदर फैक्टर्स वाले बात वो इसीलिए पढ़ा के यहाँ आया था मैं, ठीक है ना. वो आपसे आप जब भी whenever they ask you to draw the graph of ionization energy from left to right, ठीक है, जब भी वो आपसे कहेगा और या फिर एक्सप्लेन करें अगर whenever we have to explain it, हम कभी भी एक्सेप्शनल केसेस को एक्सप्लेन नहीं करते. एक्सप्लेनेशन में हम नॉर्मल ट्रेंड बताते हैं कि लेफ्ट टू राइट एज द इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the same outermost shell, the nuclear distance and the shielding effect is nearly same, but the nuclear charge increases. ठीक है, because of which the ionization energy value increases. ये हमेशा आपसे बाद में पूछा जाएगा, ठीक है. तो एक बात हमें यहाँ क्या याद रखनी है बेटा कि इफ यू हैव हमेशा ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में एक्सेप्शनल केसेस आएंगे अक्रॉस द पीरियड. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. बेरिलियम एंड बोरॉन करके आए मेरा, magnesium and aluminum. In a similar way, across the period में हमेशा group 5 and group 6 do not follow the trend. और group 5 में कौन-कौन से element हैं? We have nitrogen and oxygen. We have phosphorus and sulfur. ठीक है? I hope the point is clear. तो अब मुझे कोई बताएगा आप में से कि why the ionization energy of oxygen is less than that of nitrogen. हाँ बना लीजिए. नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन इज 8. जल्दी से बताओ क्या आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, why the ionization energy value of oxygen is less than nitrogen? So 1s2, 2s2 and 2p4, 3. 1s2, 2s2 and 2p4. So the ionization energy value of नाइट्रोजन ज्यादा होनी चाहिए और ऑक्सीजन हाफ पे, ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, क्लियर. अच्छा एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर, देखिए इफ आई ड्रॉ द बॉक्स डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन ना. सो पी एक्स पी वाई पी जेड हो जाएगा, ये रिवीजन है ना इसका. सो दिस इज 2px, 2py and 2pz. How many electrons? 1 and 2, 1 and 1. Which one is the outermost electron? This one is the outermost electron. And it is a paired electron. ठीक है, याद रखिएगा, it is easier to remove a paired electron due to electronic repulsion. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं. It is easier to remove a paired electron due to electronic repulsion. ठीक है, I hope the point is clear. It is always easier to remove a paired electron due to electronic repulsion. एक छोटा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव, दिस इज पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एग्री ना, सोडियम से लेके आर्गन तक. ऐसा आप मुझे ड्रॉ करना है लेफ्ट टू राइट, बट से ऊपर ड्रॉ करना चाहिए इसके नीचे. इफ आई हैव टू ड्रॉ इट ऑन अ सेम ग्राफ पेपर, शुड आई ड्रॉ इट अबव इट और बिलो इट?
हम्म। सोचो सोचो सोचो, पीरियड टू। पीरियड टू की देखिए, पीरियड टू में सेकंड शेल है ना, और पीरियड थ्री में थर्ड शेल है, पीरियड फोर में फोर्थ शेल है। सो द ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड टू इज ग्रेटर देन पीरियड थ्री, और पीरियड थ्री की पीरियड फोर से ज्यादा होगी। शेल नंबर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो इफ आई हैव टू ड्रॉ पीरियड टू, इट शुड बी अबव दिस, इसके ऊपर ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम करने ये जा रहे हैं कि ऑन अ सिंगल ग्राफ पेपर आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ पीरियड वन टू एंड थ्री। ठीक है, एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन एग्जाम। सो दिस इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, and then fluorine, and then neon. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and then argon. ठीक है बेटा, पीरियड वन, पीरियड टू, पीरियड थ्री, ऑल ग्राफ्स आर ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है। अब कुछ चीजें मार्क कर रहा हूँ इन दिस ग्राफ, थोड़ा सा आपको ये क्लियर होना चाहिए। दी टॉप एलिमेंट्स ये सारे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसकी बात हो रही है, और इसकी बात मीन्स अक्रॉस द पीरियड अगर एक से ज्यादा शो हुए में, द टॉप वन इज बेसिकली द नोबल गैस। एग्री? द बॉटम, these one, two, and this belong to group one of the periodic table. ठीक है, clear? The second last element of across the period is always a noble gas. ठीक है, क्लियर? सो मेक श्योर कि आपको ये ग्राफ बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद हो, कि फ्रॉम दिस ग्राफ आपके पास टॉप पे सारी की सारी नोबल गैसेस आ रही होती हैं, ठीक है, बॉटम पे सारे के सारे क्या आ रहे होते हैं, ये ऑल है ग्रुप वन एलिमेंट, एंड अक्रॉस द पीरियड दिस इज ऑलवेज एक्सेप्शनल केस बिटवीन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री। एग्री? है ना? चाहे वो बेरिलियम और बोरॉन हो, ऑल्दो इट्स मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, यानी ये हमेशा एक्सेप्शनल केस होगा ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री के दरमियान, और यहां पर होगा ग्रुप फाइव एंड ग्रुप सिक्स के दरमियान। ठीक है बेटा, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सही है। अब नाउ कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, you should be able to explain the trend of ionization energy left to right, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, पहली बात। द सेकेंड बात, इफ दे आस्क यू the difference of ionization energy between any two elements, सही है? तो उनका, अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा है, क्यों? व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू
of fluorine is greater than oxygen. ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है? तो आप वही बात लिखेंगे जो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है? द न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड शील्डिंग इफेक्ट इज नियरली सेम बट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फ्लोरीन इज मोर. नॉर्मल ट्रेंड पूछ रहा है ना, एक्सेप्शनल केस तो नहीं पूछा आपसे बेटा. ये ग्राफ हो गया तो चलो लेट्स मूव स्लाइटली फर्दर अहेड, थोड़ा सा आगे चलते हैं. And let me just show you a few questions. You all have this graph. इसको अपने सामने रखिएगा. So you can solve some MCQs of atomic structure P1. ठीक है जी. Let's talk about the first question. Easier one. Just have a look. It says the diagram shows the first ionization energy value of 11 consecutive elements of the periodic table. ठीक है? Which type of elements are labeled by X and Y? X और Y बॉटम पे कौन से एलिमेंट होते हैं? ग्रुप 1 के. और टॉप पे होते हैं ग्रुप 7. सो अगेन इजियर वन है ना. ऑल दिस मस्ट बी, या तो ये कोई अगर ये पीरियड 2 है तो इट मस्ट बी लिथियम, है ना. एंड इफ इट्स पीरियड 3 इट मस्ट बी सोडियम. तो हमेशा अक्रॉस द पीरियड ग्राफ ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम ग्रुप 1 एंड मूव टुवर्ड्स ग्रुप 7. तो बॉटम पे तो सारे ग्रुप 1 होते हैं, बाद में आपको बता कर आए. ठीक है. अगेन द नेक्स्ट वन, दिस वन. Okay, have a look at this graph. ये आपको नजर आ रहा है. Now the part 1, which statement is correct? Element Q and Y are in the same period in the periodic table. बताइए. Element Q and Y are in the same period of the periodic table. Q and Y, same period. They are belongs to the same group of the periodic table. Across the period में ना, तो top पे तो group होते हैं. तो this statement is totally wrong. The journal increase from R to Y. R to Y means across the period. The journal increase from R to Y means across the period is due to increasing atomic radius. Across the period क्या atomic radius increase होता है? Is an increase in the atomic radius across the Y, across the period? पढ़िए. मैं दोबारा स्टेटमेंट सुनाता हूँ. Across the period, as the electron is added to the same outermost shell, the nuclear distance and shielding effect remains same. ठीक है. तो न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब एटॉमिक रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस रिमेन्स सेम. ठीक है. सो दिस इज रॉन्ग. द स्मॉल डिक्रीज बिटवीन एस एंड टी इज ड्यू डिक्रीज शील्डिंग. एस एंड टी कहां पर है? ग्रुप 2 और ग्रुप 3. ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में जो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस आता है, द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होता है? पी सबशेल. एस सबशेल और पी सबशेल का डिफरेंस. ठीक है. ग्रुप 2 ग्रुप 3 में द डिफरेंस ऑफ एस एंड पी, है ना, सेम शेल में होता है लेकिन पी सबशेल में होता है. ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में कंप्लीटली फिल्ड और सॉरी पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड का केस होता है, और पेयर्ड अनपेयर्ड का भी केस होता है. ठीक है. सो पहली बात तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. देखो, उसने बोला आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज इन शील्डिंग की वजह से, शील्डिंग डिक्रीज होने से तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना बेटा. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए. नाउ डी एक दफा पढ़ लेते हैं. द डिक्रीज बिटवीन वी एंड डब्ल्यू इज ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वी एंड डब्ल्यू यानी ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में द डिफरेंस इज हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड और पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. क्लियर. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू सॉल्व दिस. ये मैं नहीं करवाऊंगा, यू हैव टू. It says shown on the graph are the relative values of the first ionization energy of the four elements that have consecutive atomic number. ठीक है. यानी 11 12 13 14 consecutive है. ठीक है. One of the element reacts with hydrogen to form a covalent compound with the formula HX. Can you give me any example of a molecule that looks like HX? HX type molecule. Any example? H2O नहीं है, वो H2X होता है. HX type.
सोचो, जिसमें एक हाइड्रोजन के साथ एक कोई नॉन मेटल लगा हुआ। या सो मॉलिक्यूल इज HCl, HFHBr, ठीक है ना। यानी X जो है इट मस्ट बी बिलोंग टू द ग्रुप 7, यानी आपको ये ढूंढना है कि हेलोजन कौन सा है ABCD में से। हेलोजन इज ग्रुप 7। So think about it. Which one is halogen? Group 7 of the periodic table. Which one is halogen? देखिए, across the period graph start from group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then goes down. ठीक है, so B must be group 8, agreed, है ना? This must be noble gas or group 8 of the periodic table. C must be group 1, है ना? D must be group 2. So ये क्या होना चाहिए? A must be 8 से पहले क्या होता है भाई? This is the halogen. Second last of left to right across the period. कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर है ना बेटा, ठीक है ना। सेकंड लास्ट कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर 17 है, 18 है, उसके बाद 19, फिर 20, ठीक है ना। तो अगर 17, 18, 19, 20 अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इट मींस कि नोबेल गैसेस के बाद दोबारा ग्रुप 1 पर आ रहा है। तो नोबेल गैसेस से पहले इज बेसिकली द हेलोजन, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे आस्किंग दिस क्वेश्चन इन सो मेनी डिफरेंट ways. Yeah, that's the same repeated question. I think there is one more question. No, this is repeated as well. Okay. Uh, before I move, let's do this one as well. एक last बात करनी है for this ionization. This chapter is going to be wind up. Okay. देखिए जनाब, it's November 2018, question 12, question 2, paper variant 1, 2. Beams of charge 92 question पढ़ना है बेटा, ठीक है। Beams of charged particle are deflected by an electric field. हम पढ़ के आ चुके हैं deflection of particles. The angle of deflection of a particle is proportional to the charge to mass ratio. ठीक है? In an experiment, proton are deflected by plus 15 degree. ठीक है? This is the deflection of proton. In another experiment, another identical in the identical condition, H2 with a charge of 1 minus deflected by a y degree angle. ठीक है, what should be the value of y? Minus 30 degree, minus 7.5, plus 7.5 और plus 30.0. पहले तो ये बताओ कि if protons are deflected in a positive direction, this particle which is hydrogen nucleon number 2 with a charge of minus, it should show positive deflection or negative deflection, है ना। अगर वो पॉजिटिव कर रहा है तो ये नेगेटिव करेगा, सो इट मींस दैट बोथ ऑफ दीज पॉजिटिव आंसर्स आर कैंसल, ठीक है, दे आर द रॉन्ग आंसर। अब सवाल ये है कि इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल शुड डबल, लाइक 30 हो जाएगी 15 से डबल होके, और इट शुड बिकम हाफ 7.5 हो जाएगी। ये प्रोटॉन से ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा या कम? देखो, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1, ठीक है। दे बोथ हैव द सिमिलर चार्ज, जितना प्रोटॉन पॉजिटिव है उतना ही ये आइन नेगेटिव है, बट द मास ऑफ दिस आइन इज डबल, सो बिकॉज दिस डबल मास द डिफ्लेक्शन बिकम हाफ। हैवियर पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराना मुश्किल है, और जो आपके पास लाइटर पार्टिकल होते हैं उनको डिफ्लेक्ट कराना आसान है। दैट्स बेसिकली द लॉजिक, ठीक है। क्लियर हो रहा है? एक आखिरी बात फ्रॉम दिस चैप्टर एंड देन दिस चैप्टर इज डन। अक्रॉस द पीरियड ग्राफ एक्सेप्शनल केसेस समझ आ गया, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग, मैं इसे कराता हूं बिग जंप के नाम से, बिग जंप इन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, ठीक है। And by looking at the big jump in ionization energy value, we can easily identify the element present. हम क्या पता लगा सकते हैं कि which element is present. Sorry, which element or which group of the periodic table. ठीक है, तो हम इससे क्या पता लगाते हैं? Which group.
अब जनाब एक बात बताइए मुझे, लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीशियम। चल, लेट मी जस्ट राइट डाउन द ओ लेवल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली तो हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर बात समझाने के लिए लेट्स राइट डाउन द ओ लेवल। यस, यू प्रोवाइड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच I1 प्रोवाइड की, ठीक है, एंड इट बिकम 2,8,1। एग्री? You provide another ionization, which is the second ionization energy value, है ना? And it becomes 2,8. Now you provide the third ionization energy value, it becomes 2,7. Can you notice that this ionization energy difference first से ज्यादा बड़ी होगी, second से बहुत ज्यादा larger होगी third one. There must be a big jump between the second and the third ionization energy value. क्या रीजन है? देखो पहले दो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हुए थे? After the removal of these two outermost electron, the third electron is getting removed from a completely filled inner shell, है ना? outermost shell खत्म होने के बाद shielding effect कम हो गया, न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गया, एंड ओवरऑल चार्ज वैसे ही इसके ऊपर +2 का आया हुआ है. So there must be a big jump in the ionization energy value after the removal of two outermost electrons, because the third electron is being removed from the completely filled inner shell that have less shielding, less nuclear distance. There is a big jump in the ionization energy value after the removal of two outermost electrons. Okay? Because the next electron is belong to the inner completely filled inner shell. Okay? So if I give you imaginary data of an element, okay, 496, 1,250, 1,025, 1,550, and so on. Can you identify the big jump in these ionization energy value? This is basically, these are the successive ionization energy value of a single element. किसी एक element की ही दी हुई है, हाँ, किसी भी एक element की दी हुई है, सही है? एक ही element की बहुत सारी ionization energy values आपको दे दी है. You have to identify the big jump in the ionization energy value, and then you have to identify which group of the periodic table this element belongs. So the big jump is here. Can you see? This is the big jump. You have to search for the biggest difference in the ionization energy value. How many electrons before the big jump? 3 electrons. So it means that its outer shell contains kitne electron beta? So which group of the periodic table? Group 3 of the periodic table. That's it. Okay? And that's it about the atomic structure as well. Now, I'm just going to do big jump wale question in a few minutes. Okay? And then you have to revise the entire topic back again. So in next session, we can do the past paper effectively. सही है? One more session for the past paper of this topic, and then this chapter is done. कैसा? सही है? रिवीजन अच्छा करना है ताकि in the next class आप मुझे बता सकें कि if you have any confusion in anything, I'll upload the leftover recording as well on the group. तो एक दफा देख लो. I'm sure कि it must be clear कि how to find out the number of electron, proton and neutron, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2s2 वाली, ठीक है, और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये सारी चीजें एक दफा जरूर देख कर आइएगा, ठीक है? Then, okay, can you identify that from which group of the periodic table
Okay. From which group of the periodic table this element belong? The graph shows the first 13 ionization energies for element X. First 13 दिए, ठीक है? What can we deduce about the X from the graph? It is in the second period of the from Leon. We never know कि second में period तो हम predict ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई दूसरा period तो given ही नहीं है, ठीक है? It is a D block. It is in a group 2 of the periodic table. It is in a group 3 of the periodic table. पहले तो मुझे बताओ कि which one is the outermost electron? Top वाला या bottom वाला? ये बिल्कुल टॉप पर है या बिल्कुल बॉटम पर है? Which one is the outermost electron? ये वाला है, either it is this one. ये है outermost. देखो जो सबसे पहले रिमूव हुआ है वही तो outermost electron होगा ना? And you can see there's a big jump after the removal of how many electrons? 2 electrons. So which group of the periodic table? Group 2. Which one is the group 2? C. ठीक है? So you can see आपने देखना है outermost कौन सा है? The first electron remove is the outermost electron, and then you look at it and you can see that there's a big difference in ionization energy value after the removal of 2 electrons. So it belongs to the group 2 of the periodic table. ठीक है? Clear? मुश्किल नहीं है. It required a bit of practice. हो जाएगा. Let's see. Okay. Now that's one. That's one. Okay, just predict 53. Just predict the group number of the element. Ionization energy values are given. सिर्फ आप predict करके बताइए from which group of the periodic table this element belong. There's a big jump after the removal of. Yes, after the this is the big jump. Agreed? So how many electrons are outermost here? 5. इसका मतलब group 5 of the periodic table. ठीक है? अभी हमने बॉन्डिंग नहीं करी तो we can't do the next. So वैसे group 5 का जो most common element है ना, that's nitrogen. And the most common compound of nitrogen is NH3, ammonia. उससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? सी. लेकिन अभी अभी आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना आना चाहिए ग्रुप नंबर. That's the main most important part. Okay. इसने कहा use the data booklet. No, data booklet is not required for this one. Element X form X negative ion. -1 charge वाला ion बना रहा है element X. So which group of this ये कौन सा होना चाहिए? Which group of the periodic table make an ion with a -1 charge? बताओ भाई. -1 चार्ज वाले नेगेटिव आयन कौन से ग्रुप बनाते हैं periodic table के? जिनके outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वही एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे ना. So you remember Cl negative, Br negative. So this is basically group 7. ठीक है? आप मेरा शायद सवाल नहीं समझे थे. मैंने आपसे कहा था कि -1 आयन कौन सा ग्रुप बनाता है. ठीक है? So group 5 -3, group 6 -2, group 7 -1. ठीक है? अब आपको इसमें से पिक करना है कि which element belong to the group 7 of the periodic table. Now listen one thing carefully. देखो बेटा, if it's belong to the group 7 of the periodic table, it means that there must be a big jump after the removal of how many electrons? 7 electrons. After the removal of 7 electrons. So they just provided us with the ionization energy value till the removal of 4 electrons. Is there any big jump till 4 electrons? नहीं होनी चाहिए, है ना? तो आपको इन ऑप्शन में से you have to pick an option in which there is no big jump. जिसमें बिग जंप आ रही होगी वो तो किसी और ग्रुप का होगा. So I can see there's a big jump here. I can see there's a big jump here. I can see there's a big jump here, and I can see there's no big jump in option D. है ना? Linearly increase हो रही है, double हो रही है, but there's no big jump. So D is the option because this element belongs to the group 7 of the periodic table. So till the removal of 4 electrons, there should be no big jump. I hope the point is clear. One more last question. Let's repeat it one.
Yes, this one. This is the last question. Element X and Y are in the same group of the periodic table. The element shows the first six ionization energies of X and Y in kilojoules. From which group of the periodic table this element X belongs? Group 5, yes, I can see there's a big jump here. Or Y, big jump here, है ना? So both belongs to group 5. This is a trick in this question. क्योंकि बच्चे सोचेंगे दोनों group 5 कैसे हो सकते हैं, but they give this option. एक इनमें से एक option ऐसा है in which both the elements belong to group 5 of the periodic table. ठीक है? अब मुझे बताओ big jump वाले question मुश्किल लग रहे हैं, है ना? आराम से पिक कर रहे हैं आप, और इस तरह के क्वेश्चंस को पिक करना आपको आना चाहिए. Now at this stage, saying it again, we're done with this chapter completely. Give it a good revision so we can do the past paper effectively from our next class. Okay? Any question?